There is no doubt that women are important. It's something I strongly believe in, I've stood for. On the medical angle, across the polo, we're trying to do more and more towards focusing especially on women's health. Like I said, Apollo Cradle, where we have the specialized environment. Our women's health checkup is a major initiative. We have women's breast cancer screening, cervical cancer screening in cities as well as in rural India. We do a lot for women's health. So I think it's number one, we're all here together during Navratri. And Navratri is really the celebration of the goddess. It is the veneration of the goddess. And for those of you, who understand it, from the mother, the baby gets, the DNA you get from the mother and father. But the mitochondria you get only from the mother. And the mitochondria is the source of your energy. So it is an appreciation of the fact of the importance of women that really creates a power across the world. And I think the world is growing up to that reality. Women empowerment is happening across every sphere of life. This is not the stage or the platform for this, but I'll be very happy to talk to you separately about women empowerment, women's contribution to GDP, women's role in India and the potential. But for now, let me just say that it is important for us to focus on women's health because the woman is the center of the home. And only when she is healthy is she able to take care. And with health comes awareness and education. So we have a series of educational series on the right kind of food, the right kind of diet because of non-communicable disease and lifestyle-related disorders, prevention, screening, many subjects. So please log on, look at our website, look at Apollo 24/7, educate yourself and become at Apollo, Spectra and Cradle. So I think like you mentioned about mental health and postpartum depression, I think this platform is a very good platform to actually bring this into an initiative at Apollo Hospital as well. So we have a mental health team as well, along with the specialists in surgery and obstetricians. So and along with surgical aspects, along with the gynecological aspects, there are a lot of mental health aspects that are associated, which I think all of us tend to neglect. And I think I really appreciate that you brought that up in today's discussion. So I'm really thankful. Thank you. There's one last Yes. Hi, I'm Tavishi Dogra from Z Media, and today is World Anesthesia Day. and I want to ask Dr. Sangeeta, role of anesthesia during delivery, and obviously Neha ma'am, if you know something, how important it is, how it affects the baby and the mother post and pre-delivery. I can give you a very non-medical version. Just tell But me. I don't want to get trolled. I'll let the important person talk first. Then I'll give you my filthy version. I was going to deflect this to one of our doctors actually and say, I'll tell you mine, but after the doctor speaks, because then I know where to hold back. But basically, I want to anchor. Let's anchor this discussion around pain-free delivery. I think that's the important one. Anchor it around pain-free delivery. Namaste to everybody. I am Dr. N.K. Sharma. I am heading the anesthesia department here. Wow, there's everybody here. We give all our patients, epidural when they start screaming out the one. So actually we all are talking about the ICU. कि ICU आ गया है, ये हुए. आप लोग मेरे चेहरे पे स्ट्रेस पढ़ नहीं पा रहे होंगे. Because अब ICU आने के बाद में we will be taking high risk deliveries, high risk surgeries and high risk patients will be taking. So I need आप सबकी दुआएं चाहिए होंगी मुझे. And I congratulate my team members also to them for the happy anesthesia day. And anesthesia services, you asked a question about that, okay? So, especially हम ट्रेनिंग की बात करेंगे, डिलीवरीज की बात करें, तो डिलीवरीज में जितनी मोडेलिटीज पेन रिलीफ की होती हैं ड्यूरिंग लेबर, नॉर्मल लेबर और वेजिटेटिव सिजेरियन, we do all those things here. We try to make delivery a pleasant experience for the patients. Painless delivery जैसे epidurals के साथ में, we sit with the patients, we explain them everything,
there are baby shower programs here in which the doctors explain them these are the options you can choose. While these are the options you can choose while going for it. Thank you so much, sir. I know a lot of us will have more questions. We will take it forward in one-on-one. Good afternoon, ma'am. I'm Dr. D.K. Das. I'm joint replacement surgeon. जब आप किसी ब्रांड के साथ या किसी भी जगह के साथ जुड़ते हैं, it's very important that have you had first-hand experience with them? We have from looking after members of our family to understanding, and we also had our own experience and we were walk-in patients. ऐसा नहीं है कि हमने किसी को 10 बार फोन किया कि हमें यहाँ पे डालो, यहाँ पे बैठ दो, यहाँ पे. So we've had absolutely like. If you have to normalize the experience of going to a hospital, whether आप nervous हैं, whether आपको अपनी registrations करानी है, जो भी है, and there's been no differentiation at any level, at any scale. Secondly, the one thing that I want to tell people, and I want to say this in the most wonderful and the most proud way, is that हम लोगों को कई बार ऐसे लगता है कि बहुत एक कोई टर्मिनल या सीवियर बीमारी हो जाए ना, सबसे पहले हम इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ेंगे, फिर हमको लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे. एक अलग तरह का एहसास होता है. आई थिंक दैट दिस इज गॉट स्टेट ऑफ द आर्ट, इट्स गॉट टेक्नोलॉजी, इट्स गॉट ऑल ऑफ दैट which your belief of what an international hospital or a remedy or a cure or an institution would provide at almost, I would imagine, 1/10 the prices. because आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ रह भी रहे हैं, आप फ्लाइटें नहीं ले रहे हैं, ऊपर से वहाँ पे you're not spending like in dollars and in pounds and you don't know. I think एक अपना मतलब एक हौसला होता है. I don't know about most of the people, but when a patient is recovering और एक तरह का एहसास होता है हॉस्पिटल का खाना होता है, जो पहली चीज होती है उनको अपने पहली चीज घर की घी वाली खिचड़ी, वो दाल खिचड़ी जो चाहिए होती है ना, वो घर से ही चाहिए होती है. एंड टू हैव स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, सर्विसेज right next to your house, for me that is just, it's huge. Like I will not look outside. I hope किसी की बारी आए भी ना, I hope ये ना हो, but it's something that is the inevitable. One time or the other, for a family member, for a friend, for sometimes yourself, you will have to go through this, you will have to experience it, and the point is to look no further. Yeah, apart from this, आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है कई जगह, आपकी कुछ आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है, आप कभी-कभी इवेंट्स में मिलती हैं. वैसे तो ये हॉस्पिटल का इवेंट है, बट अब आप टॉपिक बदलने वाले हैं. मैं बदलने वाला हूँ. अब आप मुझे कुछ ऐसा पूछेंगे क्योंकि आपने अपना बना लिया बेस, आपने नए क्वेश्चन का. ये तो हो गई अपोलो की बातें. अब मैं करूँगा दूसरी बातें जिसके बारे में आगे मैं बोलूँगी. आज हम अपोलो की बात करें, दूसरे बारे में बात करेंगे, तो फिर होगा हमारी बात का. तो फिर भी अगर आपको पूछना है तो पूछिए. सवाल नहीं, अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ, क्योंकि आप अभी रोडी से भी गायब हैं. गायब क्या नहीं दिखाई दे रही है, काफी फैंस जो है वो वेट कर रहे हैं. हमारे तो चैनल पे कमेंट आ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती नहीं कर पाती रिप्लेस आपको, तुम आपका क्या कहना है? सब बहुत अच्छे हैं, मेरा ये कहना है, पर मेरा सबसे ज्यादा ये मानना है कि आई फील दैट आई बीन अ पार्ट ऑफ अ शो for almost half a decade. I was very happy being on this show and I feel that अभी भी शो बहुत अच्छा है. नहीं, आपके कुछ अलग प्रोजेक्ट इसके बाद? जी हाँ, मेरी एक कॉमेडी फिल्म आ रही है with विकी कौशल and तृप्ति डिमरी and एमी विर्क फेब में. और हाल ही में मैंने एक और अपना पहला OTT शो किया है जो अभी खत्म किया है 3 दिन पहले, and it revolves around mental health, but it's dealt with a comedy. I think कि अभी मैं थोड़ा ज़्यादा कॉमेडी की तरफ, मैंने कभी ट्राई नहीं की थी. एंड मेरे हस्बैंड जब से मेरी शादी हुई है मेरे को यही बोलते थे ना, वेरी फनी. तो पता नहीं उनको मैं फनी क्यों लगती हूँ, पर मैं फनी लगती हूँ. नहीं, अभी आपने कहा कुछ ऐसे जो मैं ही फनी लगा. क्या आपसे बातें encourage हो गए ना दूसरे क्वेश्चंस पूछने के लिए. अब अपोलो जिसमें भी मैं आंसर कर सकूँ हम वो करें. आपने मेंटल हेल्थ की बात की,
जी मेंटल हेल्थ जो है आज के युग में आप उसको कैसे देखते हैं? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि सबको ये समझना है सबसे पहले, जरूरी नहीं है कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, जरूरी नहीं है जैसे अगर आप जिम क्यों जाते हैं कि आपके मसल्स बने रहे, हाँ, इट इज बेसिकली प्रिकॉशन, इट्स प्रिवेंशन, सो इट्स ओके, जरूरी नहीं है कि आपको उस जगह तक पहुंचना। सबसे बड़ी बात तो लोगों को ये लगता है कि हम थेरेपी नहीं लेंगे, हमें कोई बीमारी तो नहीं है, हम बीमार तो, नो, इट्स ओके टू लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ। समटाइम्स यू नीड दैट आउटलेट, समटाइम्स यू नीड टू टॉक, समटाइम्स you need someone to listen to. I myself went through a dip in my life. I had something called postpartum depression. और मुझे जब तक पॉइंट आउट नहीं किया गया, पहले 3 या 4 महीने मुझे मालूम ही नहीं था, till I actually checked what the symptoms were. And reaching out or meeting people या थेरेपी लेना, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। और ये मेंटल हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रख, जरूरी नहीं है कि पहले हम तोड़ेंगे कोई चीज फिर उसको जोड़ने जाएंगे, जो ठीक है उसकी फाउंडेशन, उसकी बेस स्ट्रॉन्ग रखो तो मतलब सही है। एंड हिचकिचाओ मत, to by reaching out to someone for your own mental health is not a bad thing. काफी देखा गया कि हाल में कोटा में लगातार बच्चे सुसाइड्स कर लेते हैं और हमारे समाज में इस सारी चीजें So, with that, a request to everyone will try to please stay focused, and if anyone else has any questions, Miss Purva is around. If you can, oh yes, please go ahead. Just a second. Hello. Yes, we can hear you. I'm Dr. Sheetal. I'm a senior gynecologist here. I must say to Sangeeta ma'am that we are all very thankful to you for having ICU in our setup, because that was a big lacuna here which we were experiencing. And I must say this is the only setup in all the big birthing hospitals which are here in South Delhi which is having an ICU. So my sincere thanks to the Polo management, to Sangeeta ma'am and to everyone for taking this initiative to have an ICU and of course an EICU